Yeah. It's connected to the history of Raja, and I would like to know, first of all, the language that was spoken in the time of Krishna, when he was here. Then the history after Krishna left, up until the Goswamis and Chaitanya Mahaprabhu rediscovered Vrindavan, what was happening here in the meantime. And it's all connected. The lila of rediscovering Radha Krishna. ठाकुर जी जिस समय थे इस ब्रजमंडल पे, तो उस समय कौन सी भाषा का प्रयोग होता था? Which language was used that time at the time of Krishna? और जब गोस्वामी 6 Goswamis यहाँ पर आए, what was the question in the time of Goswami? So what happened since Krishna left Earth until the Goswamis rediscovered the places in Vrindavan? हाँ, और जब ठाकुर जी यहाँ से चले गए और फिर गोस्वामी लोगों ने और महाप्रभु जी ने इस जगह की खोज करी, लीला डिस्कवरी, और किस किस प्रकार वो इस जगह को उन्होंने पाए, किस प्रकार उन्होंने पाया, हाउ दे फाउंड दिस प्लेस, और किस प्रकार राधा कुंड का प्रादुर्भाव हुआ, राधा कुंड अपीयरेंस ऑल्सो. शास्त्र के अनुसार अकॉर्डिंग टू शास्त्रा, ब्रजबोली जो भाषा है ये तू ज़्यादा होता है. even at the time of Krishna, this ब्रज भाषा that is in use now, आज भी जो ब्रज भाषा बोली जाती है वही ठाकुर जी के समय में वही थी. The same language which is used right now by Brajavasis, the same language was there at that time, and mainly this tu, you word, even doesn't matter. Actually, it happens in Hindi. Who is older than you have a respective word, aap. But in Braja, there is no aap. Means not this, only they use you. तू और ज़्यादा हो तो तुम. You means thou and you, these type of words are even used. आप बहुत मुश्किल में कहते हैं. Very rarely it is seen, it has been observed that someone is saying even to older in a respective way. Means for a Brajvasi, tu means it is said that we say in tu, you, to someone who is very near. We don't consider him that he is someone else. So in Braja, this saying of tu is related with this type of relation. आज भी ब्रज में Even today, गाँव में in the villages of Braja, साधु लोग को तू करके ज़्यादा बोलती है. so in the villages, those sadhus who are doing their sadhana, living in the this Brajmandal villages, the villagers of this Brajmandal, they addressing, still today they address, even they know that Baba is very elevated sadhu, even today they address this Baba by the word tu, you. तुम मतलब बिल्कुल अपना जन है. As I said, that the saying tu means that you are mine, very close. और तुम हो गया अपना से जो बड़ा है उसको तुम कहा. Tu means little younger, and tum, when someone see that his little respective older, they say tum. But there is no big difference between tu or tum. आप हो गया बहुत दूर से आए हैं, अनजान आदमी है, इतना घनिष्ठता नहीं है. Aap. And then this aap means respective. In respective way, when they say aap very rarely, when they see
some stranger, completely new person to whom they are meeting first time in their life, then they have no ghanishtata, means no close relation, then Brajvasi address him as aap, means respective way. एक बाबा गांव में रहती है, तो कुछ दिन बाद वो चला गया बाहर घूमने के लिए। So it happened one time one Baba sadhu was doing sadhana in one village, and he went for some days somewhere. तो जब बाबा कुछ दिन बाद लौट के आए, And when after some days he came back to village, तो ब्रजवासी माई लोग क्या कह रहे हैं? so the old Mataji, means Matajis of this village, Brajvasi village, हे बाबा, तू इतना दिन मर गई क्या? कहाँ चला गए? and they saying this Baba, oh Baba, where you been so many days? Oh, मैया means you might have been died or what? मैया हम थोड़ा बाहर घूमने के लिए गए थे। Then this sadhu is saying, Hari Maya, oh Maya, I just went for a little move to just travel a little bit. बोले इतना दिन बाद आया, आजा बाबा, परोठा बनाया आलू की, खा ले तू आगे। Then this Brajvasi Mataji is saying to this Babaji, okay, you came after a long time, so come to my house. Today I made this aloo paratha and have it. नहीं मैया, हम तो अभी खा के आ रहे हैं। Then this Baba says, no, oh Maya, I just ate. बोले बाबा थे थोड़ा सा खीरी खा ले। Then this Mataji is saying, oh, if you will not eat paratha, but at least you eat little sweet rice. नहीं मैया, अभी कुछ खाने की मन नहीं है। And the Baba is saying, no, I'm not feeling hungry. बोले थोड़ा चाय पी ले। Oh, then even have a little tea. बोले नहीं भैया, अभी कुछ नहीं And है। Baba is saying, no, Maya, now I'm not in mood to take anything. तो थोड़ा जहर खा ले। Then Maya is saying, oh, if you not take anything, then at least take little poison. इतना देर से मुंह मर रहे, कुछ नहीं खाएगा तो काय को आए हो यहाँ? Huh? So long time I'm asking, eat this. You are saying, no. Then why you came here? थोड़ा जहर ही खा ले, If you are not, मर जा। if you are not in mood to eat anything, so take little poison and die. ये प्रेम है, So this is Brajvasi mood. Bhav, their bhav. बिल्कुल अपना जन है। It means they are none of any other. They are their family member. ब्रजवासी लोग महात्मा लोग के साथ तो बिल्कुल ही वो हो जाता है, बिल्कुल जैसा अपना पोती की साथ जैसा बात करता है ऐसा ही बात करता है। So generally it has been observed that Brajvasi Mataji, when they see some Baba is there in the village and doing this sadhana, then there this Mataji's behavior is like same like husband while talking. In talking, their behavior is same as they talking with their husband. बोले बाबा है, हमारी बाबा है। Brajvasi says that this Hamaro Baba means our Baba, own. इधर बाबा किसके कहते हैं? पिताजी की पिताजी। Actually, the word Baba means that the father of the father. उसके साथ हंसी मजाक खूब करती है। And with the father of the father means with Baba, there is a funny relationship. तो ब्रजवासी लोग हंसी मजाक में बहुत आगे हैं। So Brajvasis are very expert in joking and in to make fun. और भगवान जब ब्रजभूमि से द्वारका चला गया, When Krishna left this Rajabhumi for Dwarika, द्वारका से
अंतर्ध्यान होने के बाद and after means leaving, disappearing from Dwarika, वज्रनाथ को ले आया, यहाँ बैठाया मथुरा। the Thakurji brought Vajranath here in Mathura. भगवान जब चला गया, When Krishna left from here, ब्रज में जो था उनके साथ सब चला गया। so when Krishna left from here, everything, whatever was there in Braja, gone with Krishna. बहुत कम आदमी था ब्रज में Very a handful, few people were there in Braja. जो केवल कृष्ण ही उनकी प्राण था, ऐसा आदमी कोई नहीं था। Means none of any single person was there that who saying that my life is only Krishna. So this type of saying people were not there. When Krishna left, they all gone also. ब्रज में जितनी था सब उनकी पारिकरी था, अपना जन था भगवान की। Whosoever were there in Braja at the time of their Leela, they were there Krishna's own parikars. सब अपना लीला समझ के अपना धाम। When the Leela finished, some they also disappeared. उसके बाद वज्रनाथ जब आए, When Vajranath came here, बोले यहाँ किसको लेके राज करेंगे हम? and he started thinking that Vajranath started thinking that what I will do here, what means यहाँ तो how कोई I है will ही, how I will run this Brajabhumi. यहाँ तो कोई है ही नहीं। There's nobody here. आज कोई प्रजा हो जो भी तो राजा। If some people means the kingdom is a kingdom with people. When no people is there, then what is the meaning of kingdom and what is the meaning of king? सब फिर उधर से कुछ गुजर कहते हैं, So, और गुजर लोग कुछ ले आए के इधर ब्रज में so from the Kshetra of Kurukshetra, from the area of Kurukshetra, because this was a very big area at that time, some Gurjar community, the community, those were Gurjar, it means mainly they were milk seller. दूध बेचने वाले ही थे ना वो लोग. हाँ, They were farmer type, but basically they were milk seller. They were calling Gurjars. So some of Gurjars came here. वही लोग आगे धीरे धीरे बांटते प्रजा भूमि भर गई। So slowly, Gurjars expanded, and now whatever you see, the expansion of mainly Gurjars, they are the oldest here. और उस टाइम उद्धव थे, In that time Uddhava was there, also there. लेकिन वो प्रकाश नहीं थे, जैसे लता पता में छिपा हुआ भजन करते हुए But he was कभी दर्शन देते थे, कभी नहीं। means he was not physically present there. He was in the form of some creepers and some trees and plants. Sometime he was appearing and again he was disappearing. It was happening like this. But Uddhav was there, भक्तराज है, still there. Bhaktaraj Uddhava, king among the devotees. भगवान जब लीला भूमि में मर्त में आने की इच्छा होती है, When Krishna desired to come here to do Leela, perform Leela on this earth, अपना पूरा परिवार को पहले ही भेज देते। so he sent all his parikars, all his families, all his Leela people before he reached. मातृलोक, पितृलोक, All he sent from all everywhere. Matrilok, Pitrilok, means Matri is a place of
सखा सखी place of mother, place of father, all sakhas, इनको पहले ही भेज Friends. दिया। this he sent all before he reached. और जब भगवान चला जाते हैं इन लोग भी पीछे पीछे सब चला जाते हैं। And when the Leela finished, they also followed him. तो अभी क्या है ब्रज में? What is right now in Brazil? ब्रज में ऋषि लोग है, तपस्वी ऋषि लोग, Tapasvis, rishis, दे, sadhu, कुछ देवता भी है, some demigods are also there. और ब्रजभूमि में वास करने के लिए इन लोग अभी आए हैं, रह रहे हैं, कोई किसी रूप में, कोई किसी रूप में। With the demigods, some tapasvi, rishi, muni, mahatmas, they are here still in Braja in different form. यहाँ ईसाई झाड़ी है, One place is here called Pisai Jhadi. कुरुक्षेत्र में जो द्रोणाचार्य की जो शिष्य थे ना, नपुत्र, Putra. At the time of Mahabharata, Dronacharya's son उन्होंने Ashwatthama, अभी भी पिछाई झाड़ी में विराजमान है। so still Ashwatthama is residing at Pisai Jhadi in Braja. वहाँ अभी भी कोई ऐसा तपस्या करे तो उसको दर्शन मिलती है, कुछ कोई बुजुर्गवासी को भी दर्शन मिलती है। So still those who are doing their sadhana, this type of sadhu, they are having darshan of Ashwatthama. And apart from that, many Brajvasi, they have had darshan of Ashwatthama, the son of Dronacharya. वो जो मूली निकाल लिया सिर में से, उसमें घा अभी भी है। So the whatever the jewel was there on his forehead, this was boon jewel. Jewel, this one money was there. So this money the Pandavas took. This money, still after taking this money, the wound is there. Who have darshan, they can see this. वो मोनी जब तक उनके पास सिर में थे, ना उनकी भूख लगती थी, ना कोई पीड़ा होती थी। So until this jewel was there on his forehead, on the forehead of Ashwatthama, till then he was not feeling hungry and he was not getting sick. तो मोनी की ऐसा प्रभाव था। This was the effect of this jewel. जब मोनी को ले लिया, जो भी से उसकी सिर में दर्द है। And after removing this gel out of his forehead, since that he has headache. बोले भगवान से प्रार्थना करी, Then बोले he हमारी prayed, ये सिर पीड़ा कैसा ठीक होगा। then he prayed to Krishna and asked that how this headache will go. बोले तुम जाओ ब्रजभूमि में, वहाँ जाके वास करो Krishna said, go Brajabhumi, stay over there और वहाँ की रोज लगाओ, तुमको आराम मिलेगा। and put this dust of Braja on your forehead. You will have relief. तो आज भी वो ब्रजभूमि पिछाई झाड़ी में रात में ऐसा महसूस होती है, जे कोई चल रहा है, कोई भजन कर रहा है, Still today, बात कर रहा है। people can feel in the night time that someone is walking and someone is talking. कोई ऐसा मालूम होता है जो जोर जोर से उस मंत्र को उच्चारण कर रहा है। And this also many have seen that
sound of this mantra, that someone is chanting this mantra. घर की बाहर निकालिए उसने When you will come out of the house, inside house you can listen the sound, and when you come out to see that who is this, then you will not able to see anything. बहुत महात्मा लोग जो नया नया गए हैं उन Those लोग निकाल आते हैं बाहर देखने के लिए, कोई आया क्या? and some new sadhus and mahatma, those who are doing bhajan over there recently, they went over there to do their bhajan. When they are in bhajan kutir in bhajan, and after listening this sound, they come out. They feel that someone came at the door, निकालने के बाद उसने ये- but when they come out, they see nothing is there. ऐसा है उस जैसे ब्रज में बहुत बहुत जाएगा है, जैसा कोकिला वन है Like the Kokila one, उसमें भी कुछ चमत्कार है। Kokila one is also it is surprising place. और पंच पांडव तो राधा कुंड में है ही है। Panch Pandav place is there at Radhakund. तो 84 पुरुष ब्रजमंडल में कोई ऋषि लोग, कोई देवता लोग, कोई वृक्ष रूप में रह के वास कर रहा है। So in Braja, in the form of some plants and tree, many rishis, many demigods, they are residing over here. वृंदावन में एक बाबा, One Baba was there in Vrindavan. उनके नियम थे रोज रात 2 बजे उठ के परिक्रमा करना। When Baba was there, this was his daily routine, that every day at 2 o'clock in the night waking up and doing parikrama. ये पूर्णिमा की रात थी, It was the night of full moon day. तो बाबा समझ में नहीं आया कि रात कितना हुआ, रात 12 बजे चल दी। So on that particular day, he couldn't understand what is the time. So it was almost like 12 o'clock. He didn't understand, cannot understand what is the time. So at 12 o'clock, he started walking for parikrama. जब परिक्रमा शुरू किया, देखते हैं कि आगे 3-4 जन महात्मा लोग भी चल रहा है। And when he started parikrama, he saw this some 4 or 5 other sadhus, mahatmas are also walking. सबके हाथ में माला झोली है All have this their big bags. और परिक्रमा करते हुए चल रहे हैं। They are chanting and doing parikrama. बाबा सोचा नहीं, हमको आज लेट हो गया, देखो हाँ? महात्मा लोग तो परिक्रमा में आ गए कब से। Then Baba thought that, oh, today I think that today I am late. You see, many people already, many Baba Mahatmas are already there. चलो महात्मा लोग के साथ आज परिक्रमा करेंगे। Then he thought that, oh, good, today I have this chance to do parikrama with all these Mahatmas, sadhus. तो महात्मा लोग को साथ चलने के लिए बहुत तेजी से भागा। So he just start running to be with these sadhus while doing parikrama together. वो जितना तेजी से चलती है उतना ही दूरत्व रह जाती है। So as fast he is walking to be with them together, these sadhus and Mahatma while parikrama, what is observed that the distance is not covering, the distance is the same. बहुत कोशिश He किया, tried a lot to be with them together, उनको साथ पकड़ने ही नहीं पाया। but he couldn't be with them together. जब परिक्रमा खत्म होने वाला है, At the time of just nearby, at the time of finishing the parikrama, उसकी पहले बहुत नीम की पेड़ था, and there so many neem trees were there. एक एक साधु एक एक नीम की पेड़ के पास गए और अंतर थे। So these sadhus, those who were doing parikrama, they each and every one, they went near to one tree among this many neem tree,
And after going near this tree, they were disappearing. ये ब्रजभूमि की आदि जो पेड़ है, ये सब मुनि ऋषि देवता इन्हीं लोग And those trees, धारण करके ब्रजभूमि में पास what we see, and what we, tree and plants we see in Brajabhumi, these are these sadhus, Mahatma and demigods are there. And taking this form of tree and plants, they are doing bhajan. ये ब्रजभूमि की वृक्ष एक साधारण वृक्ष एक भी नहीं, There is no single ordinary tree or plant is there in Brajabhumi. सब देवता लोग वृक्ष रूप में वास करते All demigods, they are in the form of these trees. हैं। बरसना में In Varshana, एक बाबा जंगल में रहती, one Baba is there, he is living in jungle. एक पेड़ है, उसकी जड़ पे रहता है। So he is living under the shade of one tree. छोटा सा पन्नी देके पेड़ की साथ बांध के और उसी में रहते हैं। So just making one covering, one plastic polythene covering under this tree, he is living there केवल वर्षा से बच जाए, just to save himself from the rain. पूरा वर्षा अपना ऊपर नहीं है, थोड़ा घन आ जाए, So little bit rainwater coming is no matter, but just covering this plastic polythene with this just to save him from the raining water. तो प्लास्टिक में अंदर घुसने की टाइम पे एक आग ऐसा नीचे झुक गया, वो बेर बेर घुसने नहीं देते थे, रुक जाते थे सिर पे। So one branch of this tree was just hanging in front of this plastic polythene covering that was disturbing him to while entrance under this plastic polythene. बाबा सोचा ये तो बहुत परेशानी है, घुसने में ये सब सिर पे लगता है बेर। Then this Baba saw this thought how this branch is disturbing a lot, then all the time is hitting on the head. बाबा हाथ से पकड़ के तोड़ दिया, And Baba, he just broken this branch with his hand. असली बात नीचे उठा पाई, So small thin branches were there. जैसे ही तुरा आवाज आया, आह लगी, When he broken this branch, the sound came out of this tree. Oh, I'm feeling pain. उतना ध्यान नहीं दिए, फिर दूसरा टल पकड़ा। Then this Baba wouldn't able to listen. Means he is not focusing too much that some sound is coming. Then he started breaking another branch. जैसे ही पकड़ा पहले बाबा आप मत तोड़ो, बहुत लगता है। And as soon as he just hold this to break, then the sound came, Baba, please now, don't break anymore. It's paining a lot. बाबा खुद हमको बोला, ऐसा ऐसा है। This Baba himself told to Keshav Baba that एक it is like this here. ज़्यादा दिन की बात नहीं है, It's not very old story. अभी की बात। Just few years back it happened. वही वृक्ष अभी भी है, This tree is still there. केवल वही है ब्रज में जितनी वृक्ष है। Not only that, mostly all trees and plants in Braja, ये सब ऐसे ही, they almost are like this. सब देवी देवता है। They're almost like demigod and goddesses. ये জন্মতক से देखे थी प्रपंचक प्रेम मित्र देखे तार स्वरूप पास, मतलब With this material eyes, we cannot see this. When we see with our divine eyes, then we can understand the real love of this Brajamandal.
प्रेम भाव लेके अगर दर्शन करेंगे तो सब दर्शन हो जाएगा। With the loving mood, not with this materialized, when we will see, then we will able to see everything very clearly. राधा रानी चला गया, नहीं Radharani left this place. सखी लोग चला गया, Sakhi is left this place. No, नहीं, no, not at कोई all. नहीं, न कन्हैया गया, Neither Radharani nor Sakhi or Krishna even. He didn't left this place. उस टाइम प्रकोट लीला थी, आप अप्रकोट लीला है। That time this Leela was visible. Now the Leela is still happening but invisible. इतना ही फर्क है बस। This is the only difference. अभी भी कोई भक्त उनकी कुछ संकल्प करे तो उसको पूरा कर देती है तुरंत। But still, if some devotee is desiring and having this kind of wish in his mind, still the wishes are fulfilling. ऋषिकेश में रहती है सब नागा लोग ज़्यादा रहते हैं उधर, हरिद्वार, ऋषिकेश। In Rishikesh, in Haridwar, these are the places for Naga sadhus. तो उसमें से एक साधु नागा, So out of them, from this place, one Naga sadhu, naked sadhu, ये ब्रजभूमि की बात बहुत बार सुनी है। so this one of the naked sadhu listened a lot about Brajabhumi. बोले ब्रजभूमि में कोई भूखा नहीं रहती। And he listened like this that nobody is starving, means nobody is remaining hungry over here in Brajabhumi. अगर खुद मांग के खाए तो ठीक है, अगर कोई नहीं मांग के खाए राधा रानी खुद जाके उसको खिलाता है। So even if someone is going and asking something to eat, then he also got something. And if someone is not asking and just staying without eating anything, that's in this situation Radharani herself comes and she feed this person. यही बात सुन के उसके मन में कुछ शंका हुआ। So this naked sadhu got little confused and doubtful after hearing this. राधा रानी खुद आए के खिला सकता है क्या? ये बात हमको तो विश्वास नहीं है। This naked sadhu was doubting that is it possible that Radharani herself can come and she can feed. उसके मन में हुआ चलो देखते हैं एक बार। Then he thought that let's go and have experience it. ऋषिकेश से चल दिया, And he came from Rishikesh to Braja. ट्रेन में बैठा, मथुरा उतरा और चलने लगा, घूमते रहे। And after coming in Braja, he was moving here and there. तो उसको बरसाना की नाम सुना तो सीधा बरसाना में था। He listened about Varshana, so he reached directly over Varshana. After a little बरसाना while. में जाके मंदिर के पीछे उधर आदमी बैठते हैं, पत्थर दिखाई देते हैं, साफ पत्थर है, पत्थर में जाके बैठ गया। And behind this Shriji temple, this stone making area is there. It's made out of stone. Just went there and sit down over there. एक दिन हो गया, 1 day passed, 2 दिन हो गया, 2 day passed. कुछ नहीं किया किसी ने। Nobody gave anything to him. अब उसकी 2 दिन बाद उसकी गुस्सा हो गई, तीसरा दिन। And after 2 days, he became angry on 3rd day. सब ऐसे बकवास करती है दुनिया। All is nonsense what they are saying that nobody remain hungry over here in Brajabhumi. ये देती हैं, वो देती हैं, राधा रानी आती हैं, Oh, someone is giving this, someone is giving this, Radharani herself coming and सब बकवास है दुनिया। all this nonsense. ऊपर खड़ी हो गई। Then get up, stand up. नागा के पास छोटा सा बैग रहता है, इतना सा,
कंधे में रहता है। This naked sadhu have just one small one bag is there on his shoulder. और एक कमंडल रहती है, एक चिमटा रहती है। And one kamandal, this pot is there for water. मुश्किल में किसी के पास एक आध कंबल रहती है। And when this one is this chimta is there. And hardly it's possible that someone is having this one blanket also. बस इतना ही लेके चलती है साथ में। Nothing else they have, more they have. अपना उठाया और कमंडल उठाया और गुस्सा होके चल दिया और शुरू कर दिया बकने के लिए। And राधा रानी तो है ही नहीं, in the angry तो mood, बक he चला just, गया। angry mood, he just stand up and started walking and saying in angry that she, who is Radharani, she is not here. हम तीसरा दिन हो गए, हमको एक गिलास पानी तो And कोई this नहीं is पूछा। my third day. Just let it be for the food. Even nobody asked me one glass of water. ऐसा बोलते बोलते मंदिर की तरफ आ रहा है। And while murmuring this, just saying all this, he came towards temple. ऐसा ही है सब। यहाँ ना राधा रानी अभी आ सकता है क्या? नहीं है ही नहीं, बात ये बात सब झूठा है। All this, they are lying. Whosoever is saying this, it's totally lie. इतना में पीछे से एक छोटा सा लाली आया। And in between, one small girl child, she came. ए बाबा, This he started saying, talking with Baba. क्या Hey बोल Baba, रहे हैं? क्या हो गया? hey Baba, what happened? What is saying? पागल हो गया Are you mad? है? छोड़ी, तू क्या करेगी? सुन के And Naked Baba said, Naked Baba said that, Arey, you small girl child, you go. बाबा की झूला पकड़ लिया। This is none of your business. And she hold the bag of this Baba, Naked Baba. क्या बोल रहे हैं? इतना And इतना she's गुस्सा saying that, क्यों? what are you saying? Why you are so angry? अरे सब कहती हैं ब्रजभूमि में कोई भूखा नहीं रहती है। हम 3 दिन हो गए, एक गिलास पानी नहीं दिया कोई। They all are saying, what you know, all are saying that nobody remains hungry over here in Brajbhumi. This is my third day, even nobody asked us one glass of water. लाली ने उसकी बाबा की झोला में हाथ घुसा दिया And this small girl, she put her hand in the bag of this Baba. और 100 की नोट एक था, उसको निकाल के लिया। And there was 100 rupees note. दिखा रहे, And she took out this 100 rupees note and she was showing to this Baba. बाबा तेरे पास तो 100 रुपया है। And said, oh Baba, you have this 100 rupees note. अरे इसको खर्चा करके खा ले, कि काहे कि दूसरे को तकलीफ दे। How you can use this for eating. Why you are hungry? And why you are making disturbing other one? यह उसी को राधा रानी खिलाती है जो केवल राधा रानी की शरण में रहती है। Here Radharani gives to whom? Those who are totally dependent on Radharani. पैसा छोटा नहीं है Those who are not touching the money. और ना उसकी कोई कमरा है। And Radharani feed them who don't have any room to live. मंदिर के नीचे जो है ना कमरा सा चौतरा, उसमें ज्यादा 2-4 महात्मा पड़ा है, उसको मंदिर से ही प्रसाद मिलती है। Go at the bottom side of the temple, you see there is one small room where some sadhus are there. Ask them, they are every day getting from the temple to eat. तेरे पास 100 रुपया है, इसको पहले खर्चा कर ले, फिर बाद में कोई है। First you spend this 100 rupees, but you have. इतना बोल के लाली बाबा की पीछे तरफ चला गया। And then you spend this, then you tell something. Just after saying these words, she just gone back to this Baba. अब बाबा मंदिर में आ गया। Now this Baba came to temple. मंदिर में आके पुजारी जी से पूछने लगे, Then he started asking Pujari ji, पुजारी जी मंदिर से कुछ महात्मा लोग को प्रसाद मिलता है क्या? and asking to this Pujari or Pujari ji, so some sadhus are getting prasad from this temple. नहीं नहीं, ऐसा नहीं मिलती है बाबा। Then this Pujari said, no, nobody is getting like this. एक लाली तो अभी बताया, बोला, नीचे में रहती है महात्मा लोग 1-2,
Well, you are saying no. One just small girl, she was there and she told me that at the bottom side of this temple, some sadhus are living and they are getting prasad from here. बोला हाँ ऐसा तो यहीं परे रहती हैं इसलिए राधा रानी की तरफ से मिलती हैं प्रसाद। वो तो कुछ त्यागी महात्मा है। Yeah. These are some totally detached Mahatma. They have nothing and they have nothing to do with anything. They are totally detached. Yeah, they are getting definitely from here some prasad. बोले कौन सा लाली? बोले यहीं तो था अभी अभी वहीं मिला था। Then this pujari asked that which lali, which girl said you this? No, now just she was here. बोले छोटा सा लाली हमारी झोला में हाथ फंसाए के 100 रुपये नोट है वो भी देख लीजिए। So see, this small girl was there and she put her hand in my bag and take out this 100 rupees note and show me and tell me like all this. बोले बाबा वो और कोई नहीं थे साक्षात किशोरी थे। Then this pujari said, Baba, she was none of any other than Radharani, Kishori ji. ऐसा तो कितना बार कितना जन को दर्शन दे चुकी है। And she gave darshan many times to many people like this. ये साक्षात किशोरी है। She herself, Kishori ji. बाबा को तुरंत आरती उतारा, अरे राधा रानी के दर्शन मिला उनको स्पर्श मिला। हाँ बाबा भगवान And है। this pujari started this naked sadhu arati. Oh, this Baba is माला पहनाया प्रसाद दिया। fortunate. Radharani touched him and he has darshan. And they started doing his arati and giving him respect and garland. राधा रानी आगे भी है। Still Radharani is there. हर घर घर में घूमती है। She is in each and every house. ये जो बात है ये ज़्यादा दिन की बात नहीं है, अभी अभी की बात है। This is not an old story. This incident, true incident, is not old incident. This is some years ago. उस टाइम हम बरसाना में ही था। And Baba was there Krishna Baba was there in Barchana that time. उसी टाइम की बात है, ये अभी अभी की बात है। This is very recent incident. तो राधा रानी ब्रजभूमि छोड़ के एक कदम बाहर नहीं रखती। She never goes out of this Brajamandal. कन्हैया भले ही चला जाए किंतु राधा रानी नहीं जाती है ब्रजभूमि। Possible that Krishna can go somewhere, but Radharani, she never. अभी भी विराजमान है, जिसको भाव है, जो दर्शन करने के लिए इच्छुक है, उसको दर्शन अवश्य मिलता है। She is still there who has this bhava mood, and those who are really desire to have darshan, she still gives darshan. ये अभी भी नूपुर की आवाज, Still the sound of ankle bell, बंसी की ध्वनि the sound of flute. बहुत जने सुना है। Many are able to listen. जिसको साक्षात दर्शन नहीं होती है, वो नूपुर की आवाज आती है, Sometimes many बंसी don't have. बजाए रहे हैं। Sometimes many don't have this direct darshan, but they can listen the sound of ankle bell and the sound of flute. रात 12 बजे के बाद देखो बंसी बज रहा है, And after 12 in the night, रास कर रहा है, many listen. The रास sound में of नृत्य कर रहा है, flute is coming, नूपुर की आवाज आ रहा है। the sound of ankle bell is coming, the dancing rhythm is going on. वो उसी को सुनाई देगा जो सुनने के लिए व्याकुल है, But this sound only those can listen. उसी को कान में आएगा ये आवाज। Those who are really anxious to listen all these things. ये And फाल- this sound will come to them only. जो फालतू बात सुनने के लिए हर टाइम कान खोल के रखती है, उसकी कान में नहीं आएगा। But this sound cannot come into the ear of those who are just listening whole day nonsense. जिसकी तन मन सब इंद्रिय सब कुछ राधा रानी की
only they can listen, आवाज सुनने के लिए व्याकुल है, उसी को whose, सुनाई देगा। whose, whose senses and everything, mind, body, atma, so everything, all senses are just involved in the service of Radharani and always anxious, restless to listen, to have darshan. They can listen this type of sound of the anchor bells and flute. अभी का कुछ ब्रजवासी लोग हैं, Some Brajavasis are there. दिन भर तो इतना काम करते हैं खेत में। Whole day they are working in the इधर के field. नियम है, लेडीज लोग ज्यादा काम करती हैं खेत में। So here tradition in Braja that many ladies they work in the field, agricultural field. दिन भर खेत में काम करेंगे, उसके बाद रात में 2-3 घंटा सोए तो सोए। Most of the time of the day they spend in this field, and hardly if they have some time in the night time, 4-5 hours, 3-4 hours in the night, they sleep. 2-2:30 बजा उठ गया। And then again when it is 2 or 2:30 in the night, they wake up. मंदिर में मंगल आरती दर्शन करेंगे, नहाए धोए के चल दिए। And so they're thinking that, oh, now the time of Mangal Aarti, so they take bath, shower, and they all do their daily routine. And at the time of Mangal Aarti, they are in the temple. राधा रानी की आसपास में जितनी गांव है, उस हर गांव में से 1, 2, 3, 4 लेडीज लोग आ जाता है, उसके साथ जेंट्स भी आता है। So all nearby villages from this, from the nearby villages of Sriji temple, of Radharani temple, the mostly मंगल आरती दर्शन from each and every house one lady comes for Mangala Aarti, and some gents, the men are also there. और मंगल आरती दर्शन करके फिर अपना And then after having darshan of Mangala Aarti, they again go back to their place. तो कृष्ण तो है, They are all संसार की पूरा काम करते हैं, they are all family खेत people. में काम करती हैं। They are all doing this worldly, material world things. They are working everything. लेकिन But- ध्यान कहाँ है, But where is the mind? मन को कहाँ रखा है? Where they are focusing? नियम छोड़ेंगे नहीं, कितना भी ठंडी पड़े, नियम, कितना भी daily बरसात routine. हो जाए, Without forgetting, without fail. It is, they are very fixed. Without failing, doesn't matter जाना how है ही hot, है। how cold. Need to go means we will go. धुआंधार वर्षा हो रहा है, कोई बात नहीं, चल दिया। It's heavily raining, doesn't matter. They come out for Mangala Aarti. नियम नहीं छोड़ेंगे। They don't want to miss a single day. ऐसा जो भक्त है, उनको सब कुछ सुनाई देता है, सब कुछ देता So है। if this type of devotee, they are able to listen everything, they are able to see. उन लोग नियम में बंधा हुआ है, They are fixed with their routine. छोड़ेगा नहीं एक दिन में। They will not give up this routine. इसीलिए एक ब्रजभूमि में अभी भी जो है, छोटा छोटा बालक जो Even in this Brajabhumi, small राधा children. कृष्ण की बात करेंगे, अच्छा आदमी नहीं कर सकते। So this Brajabhumi, even the children of this Brajabhumi, what talking, what pastime of Radha and Krishna they can talk. It is hardly possible that bona fide scholar people can talk. एक बार एक डोपड़ी हर अमावस्या पूर्णिमा को गिरिराज परिक्रमा में आती है। So one time it was like this, one old lady, all the time, at the time of new moon and at the time of full moon, she was doing Giriraj Parikrama. वहाँ एक आश्रम है, उसमें साधु लोग रहती हैं, तो वहाँ आके दंडवत करके वहाँ से परिक्रमा उठाती हैं। And she starts her parikrama where there is a one place
and many sadhus are living over there. And she offer her dandavats at this place, and she starts her pilgrimage from this place. तो जहाँ से परिक्रमा उठाएंगे वहाँ वो जूता वगैरह तो जो कुछ है साथ में वहाँ रख देती है। बाबा हम थोड़ा परिक्रमा करके आती हैं, हम यहाँ धर जाए। And at this place, she was putting her shoes. That oh, I'm just keeping my shoes out here because I'm going to parikrama. Should I keep my shoes here? परिक्रमा करके आए, After finishing parikrama, आए के जूता और रोटी सब एक साथ बांध के और कपड़ा में बांध के रख के लिया। and while leaving their shoes, they are tying these shoes also with this. They have some chapati also. So when they are starting parikrama, as well as they are leaving their shoes, and the chapatis are also there. As they are tying this chapati and shoes together, and then they going for parikrama. आए के पोटली खोली और रोटी निकला और उसमें से जूता निकाल के पहन लिया और रोटी हाथ में ले लिया। And when after finishing parikrama, coming, they just opening this potli, this cloth bag, and then taking out shoes. And just after taking out shoes, they're taking this chapati in the hand. अब बाबा आधा रोटी खा ले। And then with this chapati, they inviting Baba, come and have this chapati. अरे मैया तेरी ऐसे रोटी खाएंगे क्या हम लोग? Then these Babas are saying, oh Maya, what you doing? Does this type of chapati we will eat or what? ये चामड़ा की तो तेरी जूता है Now you have this leather shoes और उसी में रोटी भर के ले आए हो। and you are tying the chapatis and your shoes together. यही रोटी साधु लोग खाए हो क्या? So this type of chapati sadhu will eat or what? हम लोग ऐसे रोटी नहीं खाते। Or we don't eat like this. ये मोरा तू कहाँ से आ गया? Then this Mataji is saying, oh, from where you came? बाबा को ज्यादा प्यार करो तो ये मोरा ऐसा बोलती है तू हैं? ये अशुद्ध है। Then say, oh, you saying like this? Is this impure? अरे ये ब्रज में जन्म लियो, Oh, you took birth in this braja. फिर कन्हैया को कितना दूध पिलायो, I took birth in this braja and I offered a lot of milk to Krishna. और फिर ब्रज भूमि भी मर गए And in braja many are dying. और ये रस कितना उसकी शरीर अंग अंग में घुसा है। And many have this dust gone in their body. वही चमड़ा से ही तो जूता बनाया। And after ये death, अशुद्ध कहाँ रह गया? अभी तो अशुद्ध ही रह गया। and even after taking out the skin of this dead body, these shoes are made of this type of skin. So still you are saying this is totally impure. These shoes are impure. अभी ये अशुद्ध नहीं है, जो रस को एक बार स्पर्श कर लेती है वो शुद्ध हो जाती है। The shoes are not impure. When the shoes are touching this dust, this becomes completely pure. और हम पैर में पहनती है तो कितना रस की ऊपर लगती है, चलती है। And when I'm wearing and walking, and how much dust is coming on the shoes. अभी ये शुद्ध हो गया, This is totally pure. इसमें कोई दोष नहीं है। These shoes are not impure. ब्रज भूमि रस को कितना महत्व दिया है। So by saying meaning of this saying that how much importance and how big glory of this dust of Braja. ना पढ़ी लिखी है, गांव की माई है। This Mataji is not so educated. She is from a गांव village. में दिन भर वो अपना खेत में काम करती है। She is a totally completely village lady working in the field all day. लेकिन भाव का कहाँ तक है ये देखिए, But विचार कहाँ है? where how she is thinking, where is the mood?
कितना उत्साह भाव है, कितना श्रद्धा है ये रथ के ऊपर। How much faith, how much bhava is there in this dust. भाव के ऊपर ही भगवान प्रसन्न हो जाता है। भाव से ही भगवान मिलती है और किसी से नहीं This मिलती। is all the matter of bhava, your mood. ना कोई भजन करके उनको प्रसन्न कर सकती है, ना उनको भोग लगाए के प्रसन्न कर सकती Neither है, by doing lot of bhajan one can make him happy, ना कुछ and और, nor offering him very nice food can make him happy, ना कुछ अलंकार पहनाए के उनको प्रसन्न किया जाता है। or not even by offering very nice dressing or ornaments or crown, everything. इस सब से भगवान प्रसन्न नहीं होते। By all these things, actually it never becomes happy. केवल भाव के ऊपर उनको बांधा जा सकता है, Only bhav. श्रद्धा के ऊपर उनको बांधा जा सकता है, दृढ़ संकल्प के ऊपर उसको बांधा जा सकता है। With a strong faith, with a strong determination, we can bind him. माँ जसोदा जो बांधे थे ना, When Mother Yashoda bind, वो भी ये श्रद्धा के ऊपर ही बांधे थे। हमारी लड़का है, कितना जोर है, हमारी बालक है। this faith was there, very strong faith was there that, yeah, is my child. और गोपी लोग कह रहे हैं, मैं ये छोड़ दो, इसको छोड़ दो, मत Gopis are बांधो। saying, don't tie him, leave him. बोले नहीं, ये Mother बहुत Yashoda, ज्यादा बदमाश हो गया, Mother Yashoda said no, आज इसको बांध के रखेंगे। became much naughty. Today I will definitely tie him. अगर इसको शिक्षा नहीं देंगे ना, ये ज्यादा उद्यम करेगा। If I will not teach him lesson, he will become more and more naughty. इसको शिक्षा देना पड़ेगा। I need to give him one lesson, लेकिन ऐसा उद्यम नहीं करेगा। so he will not repeat the same naughtiness. ऐसा किसको कहा जाता है? जो अपना है, जो Whom- अपना लिया है बिल्कुल। For whom this type of words one can use? Actually, who is own. खुद शिक्षा देने के लिए तैयार है। मतलब किसको शिक्षा देगा? जो अपना होगा उसी को तो शिक्षा देगा ना। Mother Yashoda wants to give lesson, but to whom one can give lesson? Actually, one can give lesson to whom, who is really own. अपनापन जिसके ऊपर नहीं होता है उसके ऊपर ये सब बात नहीं चलती। Where there is no connection, where there is no closeness, there is no relation, then all these saying doesn't work over there. जब भगवान को बनना है, पहले दृढ़ संकल्प होना पड़ेगा, दृढ़ विश्वास होना पड़ेगा। If you want to tie him, we must have the strong faith, we have a strong determination, जो भी we have a strong mood. ये भगवान को बांधा सकते हैं, लेकिन Then we can bind him. कोई अहंकार लेके कोई सोचेगा हम इतना भजन करते हैं, भगवान क्यों आके दर्शन नहीं देगा? इतना भजन कर रहे हैं हम, With this proud and ego, ahankar, it is not possible. Oh, I am doing so much bhajan. हम इतनी रोज है ना माला हाँ। करती हैं, Every day I am chanting this हम this इतना much of round. रोज साधु को खिलाती हैं, And every day I am हम feeding इतना so many दान करती sadhu. हैं रोजाना, I am every day donating so many things. हम राधा रानी को इतना भोग लगाती है रोज। I am every day offering so much nice things to Radharani. हम कमती है क्या? I am less than anyone. ऐसा जो भाव है, इसमें राधा रानी को बांधा By this mood, it is not possible to bind Radharani. हजारों कोस दूर में रहेगा फिर तो राधा रानी। ऐसा By this mood, she will be miles and miles away. राधा कुंड श्याम कुंड शास्त्र में है, वत्सासुर एक असुर था कंस की। The appearance of Radharani, the story is like this.
Vatsasur, one demon was there. वो जब आए थे कृष्ण बलराम को मारने के लिए, So this demon came in the form of cow to kill Krishna and Balram. उसी टाइम कृष्ण ने उसको मार दिया था। So Krishna killed him. तो जब मार दिया, जब बात पूरा बुर्ज में फैल गया कि कन्हैया ने एक बछड़ा को मार दिया। So this news spread in Braja that Krishna killed one calf. गहत्या महापाप। Well, it becomes cow killing, gohatya, killing of a cow. वाह, सखी लोग, राधा रानी सब नाराज हो गए। All Sakhis, when Radharani became angry, कन्हैया के साथ बात करना छोड़ दिया। and they stopped talking with Krishna. किसी को दूर से देखे तो भाग जाता है सब। And from far they are looking that Krishna is coming, so they were just escaping. एक दिन कन्हैया जाके ललिता सखी को पकड़ लिया। And one day Krishna hold Lalita Sakhi बोले क्या हो गया? and asking what happened, हमसे बात नहीं करते हो? why all of you are not talking राधा with रानी me? भी आता नहीं? Radharani, she is also not coming and nobody is talking with me. Why? बोले तुम दूर से ही बात करो। And Lalita Sakhi said, the better you talk from little far away. महापापी हो तुम, You are a sinful person. गैया मार दिया और पहले बात नहीं करते हो। You killed a cow and you asking that why we are not talking with you. जो गैया की दूध पी के माखन खा के हम लोग जिंदा रहती हैं, उसी को मार दिया। By the family of this cow, drinking the milk of this family and eating the butter of this, and making this butter out of this milk. And after eating all this, that people are living, Braj Mandal are living on this, and you kill. ललिता वो गैया नहीं था, Then Krishna said, "Oh Lalita, वो this तो was असुर not था। this was not cow, it was demon." बोले नहीं, वो तो गैया की दूध धारण करके आए थे ना। And Lalita Sakhi said, "No, but it was in the form of cow. तो सब बहाना मत करो अभी। Don't excuse." कन्हैया कह रहे ठीक है, तो इसको कुछ तो उपाय है ना। Then Krishna said, "Okay, if it happened, that is there repentance for this? इसे प्रायश्चित तो हो सकता है ना। Repentance is possible." बोले हाँ हो सकता है। Yeah, it is possible, Lalita Sakhi said. बोले हमारा भारत भूमि में जितनी तीर्थ है ना, So repentance can be like this, that all holy places in India, हर तीर्थ में जाके स्नान करना पड़े। so go each and every holy places and take bath in the holy river of all these places. जो भी ये पाप से तुम्हारी छुटकारा मिलेगा, And then you will be free. What kind of sin you made. जो भी हमारी राधा रानी तुम्हारी साथ बात करे। And then Radharani will talk with you. नहीं तो क्या साल लग जाएंगे, And Krishna said, "Oh my God, it will take many years. हमारी पूरा उम्र ही चला जाएगा। And my whole, if it is not possible, that my whole life will finish." बोले नहीं, तुमको ये काम करना ही है। And Lalita said, "No, you have to do this." जो भी बात करेंगे। And then Radharani will talk. बोला चलो ललिता, अगर हर तीर्थ को यहाँ लिया तो And Krishna said, "Oh Lalita, if all these holy places and this all holy river appears here, then बोला हाँ ले आओ। then तो हो जाएगा। Lalita said, "Okay, no problem. It will also work." कन्हैया अपना वंशी से Then with the flute, with the help of the flute, Krishna खोद दिया धरती को dig the earth, और सब तीर्थ को अपना आकर्षण जो वंशी है उसके द्वारा आकर्षण किया, पुकारा, and with the सब attraction तीर्थ आके हाजिर हो गए। by playing the flute, he just called all holy places and the holy river here.
हर तीर्थ आए के हाथ जोड़ करके खड़ी है प्रभु। And all these holy places and holy rivers are just standing in front of Krishna by joining their hands. क्या क्या है हम लोग को? What is the order for me? Each and everyone is asking. कन्हैया कह रहे ललिता देख लो सब तीर्थ आया क्या? And Krishna is saying to Lalita Saki, Lalita, you see, all are here. ललिता सखी सबको नाम पूछने लगी। Now Lalita started asking each and everyone name, जितनी तीर्थ है the whole holy places. बोले हाँ सब तीर्थ है। And Lalita said, yeah, all are present here. कन्हैया ने ऑर्डर दिया कि सब तीर्थ एक कुंड में प्रवेश हो जाओ। And then all the Krishna ordered to all them that all you entered in the hole what I made over here. अब कन्हैया की आज्ञा पाने के साथ साथ तुरंत सारी तीर्थ आए के कुंड में घुस All these holy places and rivers they merged in this the place where the Krishna dig. कन्हैया कह रहे राधे अब स्नान करने से तो हम शुद्ध हो जाएंगे ना। And there became a big pond, kunda. And then Krishna asking or Radharani, after taking bath in this pond, I will be pure now. बोला हाँ। Radharani said, yeah, okay. ये क्या थे? Actually, what is this? ये यही है जब हमारी धाम छोड़ के कोई तीर्थ में हमारी भक्त नहीं जाए। This happened just because of devotee, that my devotee should not go at any other place leaving my dham. कोई धाम अगर जाना चाहे तो यहाँ ही सब आ जाए। If someone desire to go any dham, they come here, everything will fulfill. नंद बाबा भी ऐसा ही बोली थी एक बार, Nanda Baba also said the same. 4 धाम करने के लिए जाएंगे। He said to Krishna that you want to go for this Char Dham. भगवान ने यात्रा। सुना, बोले इस उम्र में आप जाएंगे 4 धाम करने के लिए? Then Krishna said, in this age you will go for Char Dham. और हम खुद है ही यहाँ, जिसकी गोद में है, And I am in your lap. वो तो मन ही मन में कह रहे। Inside he is saying, Krishna actually is not saying directly. अब कन्हैया देखा हम रहते हुए हमारी पिताजी जाएगा 4 धाम करने के लिए। Krishna saw that I am present here, and even in my presence, my parents will go Char Dham, these holy places, in this age. पिताजी आप मत जाओ 4 धाम में, Krishna said to Nanda Baba, Pitaji, Baba, you don't go कोई जरूरत नहीं है। on this pilgrimage. No need. हमारा गिरिराज है ना, Our Giriraj is there. हमको कोई जरूरत नहीं है। हम कहिए कि सेवा करने से सब कुछ हो जाएगा। We no need to go any Char Dham. After doing this cow seva, everything will fulfill. बोले नहीं लाला तू समझेगा ना। Baba said, oh Lala, it is not like this, you will not understand. ये गृहस्थी की धर्म है। This is the dharma of family life. गृहस्थ आश्रम में रहने से ये सब करना चाहिए। So if you are living in family life, you have to do this. जब भी आत्मा को कल्याण होगा, This is all the welfare for the soul. देखा जे ये मानने वाला है नहीं। Then Krishna saw that, oh, my father will not बोला will be ready like this. चारों धाम को हम यहाँ लिया तो Then Krishna said to Nanda Baba, oh, Baba, if I appear all these 4 holy places here, then बोले हाँ Nanda Baba said, okay, then no problem. 4 धाम को बुलाए। Krishna called all these 4 holy स्वयं places. भगवान को किसी को पुकारे तो रह सकता है क्या? If Bhagwan is calling someone, it is not possible that someone चारों can धाम stay. आए के बन गया। So all these 4 holy places appeared in Braja. आदि बद्री, केदार बद्री, गयाकुंड, Adi Badri, Kedar Badri, Gayakund, all are here. सेतु बंदर, रामेश्वर, Setu and Rameswaram.
जितनी था तीर्थ all holy places, सब ब्रजभूमि में विराजमान हो गए, all they appeared in Braja. प्रकट हो। हाँ, बोले पिताजी जाइए दर्शन करिए चार And then Krishna said, go, Baba, now you go, have darshan of Achar Dham. देख लो, ये ब्रजभूमि में आने के बाद After coming this Braja, बाकी नहीं रह जाता। nothing is left. भगवान सब कुछ यही ले आके इकट्ठा कर दिया। Krishna collected, means just collected everything here. और ऐसा तो कहिए तो जहाँ कन्हैया की चरण रज है वहाँ कुछ बाकी है ही नहीं। And on the other words, you can say that if himself Krishna's lotus feet dust is there, then nothing remains to have darshan of the Lord. राजधानी की स्पर्श होने के साथ साथ जो मुक्ति है ना वो भी मुक्त हो जाता है, जो सबको मुक्ति देती है वो भी मुक्त हो जाता है। Means just after touching this lotus feet with the dust, when the even mukti that for this Mayavadis and yogis are looking for, even this mukti itself, it becomes free. ये है ब्रजभूमि की महिमा। And this is the effect, this is the influence of राधा गोविंद महाराज की जय, महाराज की He जय। Jai, आज की आनंद He Jai, जय जय श्री Shri राम Ram भक्तों की जय जय। जय गौर हरि। The second segment of your answer is still remain, I think. Baba will Avinash tomorrow. वो गोस्वामियों के टाइम पर अब वो कैसे वो प्रादुर्भाव वो एक प्रश्न इसका कल समाधान होगा। केशव बाबा की जय। जय जय